Assalamu alaikum students. I hope that all of you are safe and sound. In our first lecture, we studied about problem solving method and we studied a few steps about problem solving. Today we will study other three steps of problem solving. In our first lecture, we studied problem identification, specify requirements and analyze the problem. Today we will study about design algorithm and draw flowchart. Okay, designing the algorithm requires to develop a finite list of steps to solve a problem. It is then verified that whether the algorithm solves the problem as intended or not. Writing algorithm is one of the most difficult part of the problem solving process. अब वो कहते हैं कि आपने algorithm डिजाइन करना है and you have to design the algorithm. It requires finite list of steps. algorithm किस तरह डिजाइन होता है आपके पास आप finite steps में बता देते हो मतलब limited number of steps आपके पास होते हैं जिसके अंदर आप अपनी पूरी problem का solution जिस तरह से आपने solve करना है उस सारे को step by step लिख दोगे उसको हम कहते हैं algorithm. अब जब once you have written the algorithm, you will verify that whether the algorithm that you have written is intended to solve the particular problem or that is working properly, either it's working properly or not working properly. And if it is not working properly, you have to apply the process of desk checking over here. We will study the definition in it also. So, writing algorithm is one of the most difficult tasks. Why it is one of the most difficult tasks? Because up till now we have not written anything related to the problem in our paper. It's the very first thing we have to write on the paper about our problem solving method. Okay, so most algorithm performs at least following three steps. Number one, get data. Number two, perform computation. Number three, display results. Means input, processing, and output. जब कभी भी whensoever you will write the algorithm, you need these three things. अब आप अपना input दोगे उसे बताओगे what are the inputs, आप processing करोगे और फिर आपको कोई ना कोई result उसके बारे में display होगा. So there are these three things are very crucial for writing an algorithm. Once the algorithm has been designed, it should be verified through desk checking. Same आज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि once you have written the algorithm, once you have designed the algorithm, you will verify your algorithm that whether it is working properly or not working properly by using the process of desk checking. Desk checking is an important part of algorithm design that is often overlooked. To desk check an algorithm, we must carefully perform each algorithm step just as a computer would do and verify that the algorithm works as designed. अब desk checking में क्या होता है? It is one of the most important part of algorithm design. अब इसमें आप क्या करते हो कि आप अपने पूरे algorithm को step by step verify कर लेते हो that whether your algorithm is performing well or not, and what are the flaws and what are the errors in your algorithm that you have written for a particular problem. The time and effort can be saved by locating and rectifying algorithm errors at this stage. What is the advantage of desk checking? Here they have written the advantage of desk checking in one line that your time and effort can be saved by locating and rectifying the algorithm errors at this page. मतलब अगर आप इसी stage पर अपने algorithm को टेस्ट कर लोगे, आप उसके अंदर से एरर्स रेक्टिफाई कर लोगे, एरर्स निकाल दोगे और अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आगे चलकर आनी थी, अगर आप उसको एल्गोरिथम में ही सॉल्व कर लोगे, उसे लोकेट कर लोगे, तो आपके लिए आपका टाइम और आपकी एफर्ट दोनों वो सेव हो जाएंगी बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डेस्क चेकिंग. क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एल्गोरिथम डिजाइन कर लें, आप फ्लो चार्ट बना लें और एट द एंड आपका जब आप 8th स्टेप पर पहुंचेंगे, जब आप 7th स्टेप पर आप पहुंच रहे हो, तो उस टाइम आपके पता चले कि आपने तो जो एल्गोरिथम लिखा था या जो आपने रूल्स और मेथड्स आपने यूज किए थे वो ही ठीक नहीं थे. That is why we apply the process of desk checking in this 4th step of problem solving. Next, there is a simple definition of a program. A program is a set of instructions given to the computer to solve a particular problem. It is written in a programming language. A program क्या होता है? It is a simple set of instructions. ये वही definition है जो आप छोटी classes से पढ़ते आ रहे हैं. That a program is a set of instructions given to the computer. आप computer को instructions देते हो to solve a particular problem. आपने कोई भी problem solve करनी है, उसके लिए आप अपने computer को instructions देते हो and it is written in a programming language. जो भी instructions देते हो उनका format जो होता है वो आपका programming language होता है. If you are interacting with the computer, you are using machine language. Okay. Now it is the proper definition of desk checking. Desk checking is the process of carefully observing the working of an algorithm on the paper for some test data.
Algorithm is provided a variable set of input for which the output is examined. अब ये इसकी exact definition है, उसने इसमें यही explain किया that you want to carefully, if you want to carefully observe the working of an algorithm on the paper, आपने अपने पेपर पे अपना algorithm डिजाइन कर लिया होता है, उसके ऊपर आपने टेस्ट डेटा चलाना होता है, मतलब टेस्टिंग करनी होती है कि जो आपने algorithm लिखा है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप अपना टेस्ट चेकिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हो, ठीक है। अब यू हैव टू प्रोवाइड द इनपुट, आप जो वेरिएबल्स आपने सेलेक्ट किए होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, आप उनको इनपुट असाइन करते हो और फिर आप अपनी आउटपुट एग्जामिन करते हो दैट वेदर योर आउटपुट इज दैट व्हाट यू वांट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ द फ्लो चार्ट। अब इस स्टेप 4 जो था इसके अंदर दो पार्ट्स थे, सबसे पहला आपका पार्ट जो था वो डिजाइन एल्गोरिथम था और इसके अंदर ही सेकंड पार्ट है ड्रॉ फ्लो चार्ट। दो चीजें आप इसी स्टेज पर बनाओगे, one an algorithm and other is flow chart. Now this was the discussion about algorithm. Let's start the discussion about the flow chart. Draw the flow chart. After designing the algorithm, the next step is to draw a flow chart. अब वो कहते हैं कि जब आपने algorithm design कर लिया, once you have designed the algorithm, the next step is to draw a flow chart. So what will be your next step? That would be to draw a flow chart. Flowchart in fact maps the algorithm to a pictorial representation which helps in understanding the flow of control and data in the algorithm. We shall discuss in detail the way the flowchart is drawn later in this chapter. अब वो कहते हैं flowchart क्या होता है? Flowchart में क्या होता है? Once you have designed the algorithm, आपने algorithm design कर लिया, आपने finite list of steps बना लिए कि आपका step 1 किस तरह काम करेगा, step 2 क्या करेगा, step 3 क्या करेगा। अब जब आपने ये steps बना लिए, अब आप क्या करोगे? आप अपना flow chart draw करोगे, and but actually the flow chart is the pictorial representation of it to help in understanding the flow of control. आपने अपने program का जो flow आपने बनाया है कि step पहले क्या होगा, secondly क्या होगा, third क्या होगा, उस सारे को आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दोगे, मींस टू से दैट यू हैव टू ड्रॉ अ सिंपल फ्लो diagram of your algorithm that is known as a flow chart. So about detailed description, there is a detailed description in the last topic of this chapter about flow chart. Okay, now moving towards the fifth step of problem solving, write the program, that is coding. This is one of the most important part of your design of a problem solving method. This step involves the conversion of an algorithm to a program written in any programming language. For this purpose, the programmer must know the syntax of the programming language chosen. The grammatical rules of a programming language to write programs are referred to as syntax of that programming language. Now, once you have identified your problem, that was the step 1 of problem solving method. Second was your specify requirements. You have specified all the requirements that whatsoever your stakeholder wants from you. Third one was of analyze the problem. Analyze, you have decompose your problems into different sub problems. And the fourth step which we have studied right now, that was of designing algorithm and draw flow chart. And the fifth step, now it's time to write the code of the program. अब आपने अपने program का code लिखना है. And coding आपने किस तरह करनी है? You should know the rules, grammatical rules of the programming language which you are following to write a program. जो भी programming language आप choose करते हैं, whether you are writing your program in C language, C Sharp, .NET, Java, Basic, whatsoever programming language you are using, you must be fully aware of all the grammatical rules of that programming language. And if you are not aware with the grammatical rules of the programming language, there will be a couple of mistakes and you can't write the program exactly as required. So the grammatical rules of a programming language to write a program are referred to as syntax of that programming language. जो grammatical rules आप अपने programming language के लिए या लिखते हो अपने programs को लिखने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? That is known as syntax of that programming language. अब हर language का एक अलग अपना syntax होता है. For example, if I am conversating with you in English language, that I must know the programming rules of, I must know the language rules of English. So that is why if I am talking with you in Urdu, I must know all the grammatical rules of Urdu language.
So each programming language in which whatever the language you are communicate using, you must know the syntax of that programming language. Syntax हम actually कहते हैं उसकी ग्रामर को, जैसे इंग्लिश ग्रामर होती है, उर्दू ग्रामर होती है, सिमिलरली हर लैंग्वेज की अपनी एक अलग ग्रामर होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Okay, now moving towards the sixth step of problem solving, that is test and debug the program. Testing and debugging. It's one of the most important part of problem solving method. This stage requires evaluating the program to verify that it works as desired. Don't rely on just one test case. Run the program several times using different sets of data, making sure that it works correctly for every situation provided in the algorithm. If it is not producing desired results, the errors or bugs must be pointed out and debugged. अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने अपने प्रोग्राम की टेस्टिंग करनी है. अब आपने देखो अपना कोड लिख लिया, आपने पूरी कोडिंग कर लिया स्टेप 5 के अंदर. Once you have done all the coding of the program, you will apply test data on it. अब टेस्ट डेटा क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग टू वेरिएबल्स इन योर प्रोग्राम, लेट्स सपोज a is equal to 10 and b is equal to 20. सो आप अपने प्रोग्राम को यू विल रन इट सेवरल टाइम्स, आप सेवरल टाइम्स उसे रन करोगे. ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक दफा a इज इक्वल टू 10 लिखा और b इज इक्वल टू 20 कर दिया और अपना प्रोग्राम रन कर लिया तो आपका रिजल्ट ठीक आ गया. ऐसा नहीं है. मे बी जब आप a इज इक्वल टू 10.5 करते हो तो आपका रिजल्ट वेरी कर जाए, आपका रिजल्ट ठीक ना आए. तो क्या करोगे, आप मल्टीपल टेस्ट डेटा को यूज करोगे अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए, अपने प्रोग्राम की टेस्टिंग करने के लिए. So जब आप टेस्टिंग करोगे, if your program is not producing the desired result, then all the errors must be pointed out and it must be debugged. अगर आपको 10.5 अगर आपने a की वैल्यू दी है और आपका आउटपुट जो है वो रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आती जो कि आप चाह रहे थे, जो कि इनपुट a is equal to 10 देने से आ रही थी, तो क्या करोगे, आप चेक करोगे that there are the errors in your program. कोई ना कोई एरर्स आपके प्रोग्राम में है, तभी आपकी आउटपुट जो है वो सही जनरेट नहीं हो रही. Then you will apply the process of debugging. अब debugging क्या होता है? Debugging is the process of finding and removing errors in the program. Debugging क्या होगा? Debugging is the process of finding. आपने अपने प्रोग्राम को टेस्टिंग जब की तो आपको एरर्स मिल गए थे कि आपके यहाँ एरर्स. अब डीबगिंग क्या है? आपने उन एरर्स को फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है और उन एरर्स को अपने प्रोग्राम में से रिमूव करना है, रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम. ये डेफिनेशन एज अ शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ लॉन्ग यहाँ से एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है. एक व्हाट डू यू नो अबाउट डीबगिंग? एक्सप्लेन द एरर्स फाउंड इन द in any programming language or explain the errors in GW basic. यहाँ बेसिकली हम GW basic की लैंग्वेज यूज करेंगे, that is fine. So there can be three types of programming errors. तीन तरह के errors आ सकते हैं जब भी आप debugging करोगे, मतलब जब errors को remove कर रहे होगे, उसे find out कर रहे होगे, तो तीन तरह के errors आपको मिल सकते हैं. First one is syntax error, second is runtime error, that is also known as execution error, and third one is logical errors. Ab debugging, they have again written the definition of debugging over here. Debugging is the process of finding and removing errors in the program. Next, they have stated about syntax error. Syntax error अब क्या होता है? A syntax error occurs when the program violates one or more grammatical rules of the programming language. Syntax error आपका कब आता है? When the program violates, जब आपका प्रोग्राम violate करता है, जब आपका प्रोग्राम आपके जो grammatical rules होते हैं उस language के grammatical rules of the language जब ये follow नहीं किए जाते, तब आपका syntax error आता है. These errors are detected at compile time. मतलब जब आप अपने प्रोग्राम को चला रहे होते हो, जब आप अपने प्रोग्राम की कंपाइलिंग कर रहे होते हो, तब आप इन एरर्स को लोकेट कर सकते हो. That is when the translator, compiler or interpreter attempts to translate the program. There can be many reasons. For example, trying to execute a wrong program statement or command such as typing print instead of print, or typing or trying to assign a value to a constant such as 5 is equal to count, etc. अब वो कहते हैं syntax error कब आता है? Syntax error occur when you are not following the exact rules of the programming language. जब आपने exact rules नहीं follow किए, then you will face a syntax error. Example उसने बड़ी easy सी यहाँ पर दी. उसने कहा कि for example if you are typing print
मतलब कोई आपने स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट की, कुछ आपने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है तो आप लिखते हो उसके लिए PRINT, मगर आपने गलती से लिख दिया PINT, आर का वर्ड जो है वो आपने स्किप कर दिया, तो क्या होगा, दैट इज द सिंटेक्स एरर, मतलब आपने जो लैंग्वेज थी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आपका सिंटेक्स एरर आ जाएगा। एक और एग्जांपल उसने यहाँ दी, they are saying that if you have assigned 5 is equal to count, ऐसा ग्रामेटिकल प्रोग्रामिंग रूल में ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन कर दो। स्ट्रिंग वेरिएबल्स मींस टू से ये ABC की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब आप कभी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, या आप एक न्यूमेरिकल डिजिट को वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। वेरिएबल मतलब ABC की यही होते हैं आपके। तो आप हमेशा वेरिएबल को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर 5 इज इक्वल टू काउंट जो लिखा हुआ है दैट इज नॉट करेक्ट। आप यू मे राइट काउंट इज इक्वल टू 5, मतलब काउंट आपने एक वेरिएबल लिया और उसको आपने वैल्यू दे दी 5, इस तरह तो आप कर सकते थे, मगर 5 इज इक्वल टू काउंट दैट इज अ सिंटेक्स एरर। सो डू यू नो डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड, किसी भी नंबर से आप किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो दैट इज अनडिफाइंड। यहाँ पर भी अगर इस तरह से भी आप कोई अपना प्रोग्राम के अंदर कोई इस तरह की चीज भी लिख दोगे दैट वुड आल्सो बी इन द सिंटेक्स एरर। So this was the discussion about syntax error. Next error is runtime error. अब runtime error क्या होता है? A runtime error occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by zero. अब runtime error कब occur होता है? When the program directs the computer to perform an illegal operation. मतलब illegal operation किस सेंस में हो सकता है? For example, dividing a number by zero. किसी भी नंबर को आपने कह दिया कि आपने उसे जीरो से डिवाइड कर दें, या इस तरह का कोई भी इलीगल ऑपरेशन अगर जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस अगर आप अपने प्रोग्राम में लिख दो अपने प्रोग्राम के इस तरह से करें तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ रन टाइम एरर। Runtime errors are detected and displayed by the computer during the execution of the program. और runtime error कब आपके डिटेक्ट होते हैं? आपके जब आप अपने कंप्यूटर की प्रोग्राम की अपनी एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, मतलब आपने जब अपना प्रोग्राम चलाया, once you are executing your program, then the runtime errors are detected. When a runtime error occurs, the computer will stop executing the program and may display a diagnostic message that helps in locating the error. अब वो कहते हैं रन टाइम एरर कब अकर होगा? व्हेन द प्रोग्राम विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। रन टाइम एरर जहां पर भी आ जाएगा योर प्रोग्राम विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, आपका प्रोग्राम काम करना बंद कर देगा, योर प्रोग्राम विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग एंड इट मे डिस्प्ले अ डायग्नोस्टिक मैसेज, आपको एक मैसेज लोकेट कर देगा दैट देयर इज एरर इन योर whatsoever line, it will just display a simple error message that there is an error, runtime error in your program. So this was the runtime error. Now the third error is logical error. Logical error basically क्या होता है? Logical error occurs when the program follows a wrong logic. ये बड़ा सिंपल सा है कि जब कभी भी आपने अपने प्रोग्राम में गलत लॉजिक फॉलो की या वो लॉजिक आपने फॉलो की जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो उस तरह के एरर्स जो होंगे वो आपके लॉजिकल एरर्स कंसीडर किए जाते हैं। The translator, compiler or interpreter does not report any error message for the logical error. अब वो कहते हैं कि लॉजिकल एरर का कोई कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो बैकएंड पर आपका प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था अबाउट द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, दीज आर टू लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो ये जो जब आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट हो रहा होता है देन दीज एरर्स डज नॉट दीज ट्रांसलेटर्स डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज, आपको कोई एरर मैसेज नजर नहीं आ रहा होता। दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू लोकेट, ये जो एरर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लोकेट नहीं किए जा सकते, मतलब मुश्किल से लोकेट किए जा सकते हैं। Logical errors can be identified by just looking at the wrong output of the program. आप किस तरह से इन्हें आइडेंटिफाई करोगे? You will look at the wrong output. If your program is displaying the wrong output, then you can say that there might be a logical error in your program. तो आप क्या करोगे? You will check all your program or you will check all your coding whatsoever you have written. Logical errors can be detected by thoroughly testing the program, observing all variables closely and testing each path of the logic flow in the program. अब आप इसे किस तरह टेस्ट करोगे? आप अपने पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करोगे, सारे प्रोग्राम की अपनी लॉजिक देखोगे कि कहां पर आपका प्रोग्राम के अंदर एरर्स आ रहे थे। So this was the
types, these were the types of errors. Debugging क्या होती है, what is debugging, and explain in detail the types of programming errors, मतलब कौन कौन से आपके errors आ सकते हैं. अब आज हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं, मतलब आपके ड्रॉ एल्गोरिदम, डिजाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम, दैट वाज कोडिंग, एंड टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम. अब ये 3 स्टेप्स हमने आज के लेक्चर नंबर 2 में कवर किए हैं. नाउ योर होमवर्क इज that you will do a simple you will write the simple answer of this question. डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसके अंदर आपने अपनी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की डेफिनेशन लिखनी है एंड यू हैव टू डू इट इन योर रजिस्टर्स. नेम इट्स ऑल स्टेप्स, इसके जितने भी स्टेप्स है, देयर आर 9 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इन 9 के आपने नाम लिखने हैं in bullets and briefly explain any 3 of them. Up till now we have studied 6 steps. 6 steps हमने पढ़ लिए हैं problem solving के. So if you have to explain any 3 steps in detail. Okay, you will write this question in your registers as a long question and as a homework. Any questions?